Let us discuss the journey of Draupadi Murmu. Good morning, all of you. As you all know, we are reporting on the topic of Draupadi Murmu. Today, as we all know Draupadi Murmu as our president, the little child which is known as Tudu Putti, the name given by her father, is known as president of our country after Ramnath Kovind. She was born on 20 June 1958. Now, we are further discussing on this topic in this survey. Draupadi Murmu was born on 20 June 1958. He is from Odisha. She is a follower of Brahma Kumaris. Draupadi Murmu was born on 20 June 1958. He is from Odisha. She is a follower of Brahma Kumaris. द्रौपदी मुर्मू हमारी पहली जनजातीय संथाल राष्ट्रपति, जो कि शुरू से ही एक ऐसी कम्युनिटी से आती हैं। एक संथाल कम्युनिटी, उनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में। वो एक शुरुआती, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स, कई सारे उनके हस्बैंड की डेथ हो, उनके एक एक्सीडेंट में उनके 2 बेटों की डेथ हो गई थी। और उसके बाद ये स्टार्टिंग में एक टीचर थी। टीचर के बाद में ये पार्षद बनती हैं अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट की। फिर ये आती हैं 2 या 3 बार तक राज्यपाल बनती हैं। आज हम देखते हैं कि वो हमारी पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं, देश की सबसे गणराज्य की सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति। Draupadi Murmu is an Indian politician serving as the 15th and current President of India since 25 July 2022. She is a member of the Bharatiya Janata Party. She is the first person belonging to the indigenous scheduled tribe community to be elected as the President of India. Here are a few things you must know about India's President Draupadi Murmu. She is elected and appointed as the 15th President of India. She was born on 20 June 1958 at Uparbeda village, Mayurbhanj, Odisha. She is an arts graduate from Ramadevi Women's College, Bhubaneswar. She started as a school teacher, worked as a clerk at Irrigation Department, Government of Odisha, and joined BJP in 1997. Important first, she is the first tribal politician to be elected as President of India, first person from Odisha state to occupy this post, first individual to have been born after India's independence in 1947 who has been elected to the post of President of India. She is the first woman governor of Jharkhand state appointed on 18 May 2015. She is the first woman from her village to leave for Bhubaneswar to earn a college degree. Career highlights. She is the youngest President of India at the age of 64 years 46 days. She is the second woman President of India after Pratibha Patil. In 1997, elected as councillor, became Vice Chairperson of Rai Rangpur Nagar Panchayat, 2000 to 2009, 2-time BJP MLA from Rai Rangpur constituency, 2000 to 2004, Minister in Naveen Patnaik government, 2006 to 2009, President of BJP's Scheduled Tribe Morcha in Odisha, 2000, honoured as Best Legislator Neelkant Samman by Odisha Assembly, 2015 to 2021, Governor मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था। लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन
इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुरानी लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। Setbacks for next presidents or prime ministers. As you all know, in our first speech, our president Draupadi Murmu said, "The poor not only dream but also vote on the topic of Draupadi Murmu." Now I am inviting my team survey member Ranjan Tiwari for their interest. As you all have seen our report in which we have discussed about our newly formed President Draupadi Murmu. As you She is know from that, Odisha. let's see date it. Our community, she represents a community, tribal community of Odisha. It's our pleasure to have a survey on such a great lady. It was all about our survey. I think you must have seen and enjoyed it. It was full of knowledge and it must have delivered a knowledge and a power of empowering people, women and our country. Thank you.